Okay, good evening, all of you. And today I'm going to give you full-fledged exposure to conic section. So what I'll be doing is I'll solve the January sessions 2024 questions on parabola, ellipse, and hyperbola, which means entire conic sections. Before I go further, a small disclaimer is if you are able to understand the solutions properly, and I'll ask you to remember some of the fundamental result because you don't need to know, like full hi-fi and result from these conic sections, and no need to mug up even so many formulas because it's not required. So if you know the basic concepts, that's enough to solve 99.9% problem of JEE Mains, and in fact advanced also. But here I'll be concerned with JEE Mains. So let's start with this. And the first question of parabola goes like this. If shortest distance of parabola from the center of the circle is d, then we have to find dA square. So we know y square equals 4x is going to be some curve. It's always mandatory to draw a rough picture, if not exact picture. Okay. And we know this circle is centered as 2, 8, right? And what's the radius of this circle? You can calculate radius as root over g square plus f square. So 4 plus 64 it is square minus c value, which is 64. So radius is 2. So 2, 8 and radius 2. So somewhere let's say this is the circle with 2, 8 and radius 2. Now we want shortest distance within this parabola and circle. Of course, we know shortest distance will occur along the common normal. So it means at a parabola, if I'll take some random point, okay, 80 square to 80, or in general some point P, at that point if I'll draw normal, it must pass through the center of the circle, because this will be a common normal both to parabola as well as circle. For circle, normal always passes through center. Okay, now it's always wise to remember the equation of normal, and that's very important in the slope form. So let's say normal having slope m. In fact, you can derive this also. If slope is m, you can take a point, let's say x1 comma y1 on the parabola, write the equation of tangent, compare that equation with because if slope of normal is m, slope of tangent is going to minus 1 by m, and by doing all that. But it's better for y square equals 4x. You can remember mx minus 2am minus am cube. This is a usual equation of normal at y square equal to 4x. I recommend you to derive this result, because let's say if they change the equation to x equals y square, okay, so you can clearly do it in calculus also without having pre-knowledge of anything else. Now here a is 1, so clearly a we can take 1. So this is the normal. Now we know this normal must pass through 2, 8. So hence we got our equation 8 equals 2m minus m cube. 2m gets cancelled, m equals minus 2. Now the moment I know m equals minus 2, we know the point, because point will be what? Point is am square comma minus 2a. Now how you got to know this is the point at which normal is drawn? तो ये भी आसान है. Suppose ये वाला जो point है उसको if I take 80 square comma 280, so a is 1, so t square comma 2t, right? Now at that point t square comma 2t, what is the equation? What is the slope of tangent line? So I'm giving you a rough derivation. So 2y y dash equals 4, so y dash is 4 by 2y. It means 2 by y. Now y is 2t, it means y dash is 1 by t. It means slope of tangent is 1 by t, right? But we know slope of tangent, if slope of normal is m, which I have considered, slope of tangent is minus m, hence t is minus 1 by m. ठीक है? 1 by t is slope of tangent. So slope of normal is going to be what? Sorry, slope of normal is minus t, and minus t is m, so t equals minus m. It means I know t in terms of the parameter t in sum of slope of normal. So t is minus m, so the point will be m square comma minus 2. तो मेरे पास पॉइंट मिल गया. पॉइंट यहाँ से क्या होगा? m का वैल्यू कितना आया? minus 2 आया. सो पॉइंट जो यहाँ पे मिलेगा वो आपको 4,4 मिलेगा. अब पॉइंट पता है 4,4 ये वाला, और सेंटर पता है आपको 2,8. तो ये पूरा डिस्टेंस जो है वो कितना आने वाला है? ओके, शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ही पूछ रहा है आपको. पूरा डिस्टेंस फार्मूला से डी स्क्वायर इज गोइंग टू बी 20. दैट्स द आंसर. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सर्किल एंड दैट? देन यू हैव टू टेक अवे रेडियस. ओके, like root 20 minus this 2. So I hope you got the concept. So this was the basic idea. Let's move to the next question. अब next question में क्या है? P is alpha comma beta भैया, point on parabola. फिर से देखो standard parabola ही पूछेगा always, या फिर little bit shifted. If P also lies on a chord of parabola whose midpoint is 1, 5 by 4. अब ये भी standard question है.
बोल रहा है P जो है वो इस पैराबोला का पॉइंट है. इट मीन्स एक तो रिलेशन आ गया बीटा स्क्वायर इक्वल्स 4 अल्फा. एंड P ऑल्सो लाइज, P मीन्स पॉइंट जो है वो कहीं सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओके 8y, ये कुछ पैराबोला होगा. नाउ P इज ऑल्सो लाइंग ऑन the chord of the parabola. So there is some chord of parabola whose midpoint is 1 comma 5 by 4. So for this parabola, let's say midpoint of the chord is 1 comma 5 by 4. So P lies somewhere on this line, ठीक है, on this chord. तो suppose ये जो point P है ये still alpha comma beta. So now clearly I have to first find the equation of the chord having midpoint 1 comma 5 by 4. So you know that is very easy because equation of chord having midpoint given is T equal to S1. Okay, so what is T? Of T is you can replace x square with x1 as under conic section idea minus x1 minus 4 times replace y with y plus y1 by 2, so it will be 8 will become 4 is equal to S1. S1 means in the expression x square minus 8y you put x1 in y1, x square minus 8y, ठीक है. So I hope this is clear. So this is the equation of chord having midpoint T equal to S1. Now we know x1 comma y1 because x1 comma y1 is 1 comma 5 by 4. Okay. So instead of x1 I'll keep 1 and y1 will keep 5 by 4. So by putting this we are getting x minus 4y plus 4 equals 0. So that's the equation that we are getting for the chord. Now what I am going to do is, of course, this equation will be satisfied by alpha and beta because that lies on this. So alpha minus 4 beta plus 4 equals 0. And we have got one more relation which is beta square equals 4 alpha. Beta square equals 4 alpha. So one way of solving this is just we'll calculate the value of alpha and beta and we'll put here. Okay. Because if it were alpha minus 8 and beta minus 8, then might be we can think of a quadratic and using transformation of root also, product of root we can find. But here since we have, you know, alpha minus 28 and beta minus 28, so that doesn't look so cool. तो यहाँ पे solution is also easy क्योंकि beta square जो आने वाला है second equation से, that will be alpha plus 4 by 4 whole square equals beta square, beta square is 4 alpha. तो यहाँ से आपका alpha का वैल्यू आ जाएगा और फिर बीटा का वैल्यू है. तो अल्फा का वैल्यू दैट विल गेट इज 28 प्लस माइनस 16√3. ये आप चेक कर सकते हो, ये क्वाड्रेटिक आसान है. नाउ वंस यू नो अल्फा, ओके, इन दिस एक्सप्रेशन इट्स बेटर टू पुट अल्फा इन अ लीनियर. सो द वैल्यू ऑफ बीटा वी आर गेटिंग इज 8 प्लस माइनस 4√3. सो व्हाट वी वांट इज अल्फा माइनस 28 इनटू बीटा माइनस 8. सो क्वेश्चन वाज सेट इन दैट मैनर जिससे आप इसका वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सको. बीटा माइनस 8, ये माइनस बी वाला जो टर्म था दैट इज कमिंग एज 28 and 8. So that is giving you 192 because you can clearly see these two values will multiply 16√3 and 4√3 and we are done with that. So I hope this is clear. Let's move to the third question. So the takeaway from this question is T equal to S1. Okay? And that's very important takeaway. Now moving to the third question, the maximum area of triangle whose vertices are 0, 0 and other two vertices lie on the curve this. At points x comma y and minus x comma y. Now the question again is easy because area of triangle is half into determinant found by 3 points. So we have already 3 points 0, 0, x comma y and minus x comma y. Okay. By symmetricity, you know, like this will be reflection in y axis. एनीवे तो मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रिंगल आपसे पूछ रहे हैं जो y इक्वल टू माइनस 2x² प्लस 24 का. सो एरिया ऑफ ट्रिंगल इज 0, 0, 1 x1 y1 1 x2 y2 1 and minus x y. If I'll expand along this, so the 2 cancel, so it's basically xy. Now since area is positive, so fundamentally we have to take positive value, right? So mod xy we have to do, right? Now we already know y is related with x, so this becomes very easy question. तो अब एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना होगा, एक्स एंड वाई विल राइट माइनस 2x² प्लस 54. So this quantity is delta
and if we calculate d delta y dx equals 0, we are getting it to be 3, x equals 3, right? Because minus 2x cube plus 54x derivative 0, so that will give minus 6x square plus 54. So x square is 9, so x is plus minus 3. For positive value, if I'll take x equal 3, the area that we are getting is 108. So the answer for this question is 108. So these were only 3 questions which was there in your examination. Now one little bit small topic which I will tell you. In parabola, the most important point is one of the property is if you have any focal chord, like chord passing through focus, and the tangents are drawn at the extremities of focal chord, they will be orthogonal, means they will be 90 degree. Moreover, this point where this tangent meets will lie on डायरेक्ट्रिक्स. तो ये वाला प्रॉपर्टी जो है इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसका ब्यूटी क्या है, दे माइट आस्क यू, दे माइट गिव यू 2 points okay on the parabola such that intentionally it's passing through focus, and they'll ask you they, let's say they intersects at point P, so find the locus of orthocenter of PAB. तो ऑर्थो सेंटर जो इस ट्रायंगल का होगा, जो कि ये 90 है, तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉइंट पी खुद हो जाएगा, मीन्स वो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, राइट? सेकंड क्वेश्चन इससे बन सकता है, अगर आपको पी ए बी का सर्कम सेंटर पूछ ले तो वो हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी. दैट माइट नॉट नेसेसरली बी फोकस, ठीक है, इट विल बी फोकस जब ये स्ट्रेट लाइन होगा, मीन्स लैटिस रेक्टम होगा, तब मिड पॉइंट होगा. इन जनरल ए बी का जो मिड पॉइंट होगा, कि ए पॉइंट यू कैन टेक 80 a square 280 and point B, since it's passing through a comma 0, so that will be fixed, it will be 80 a square minus 2a/t, इसका पैरामीटर माइनस. तब यहाँ से आप x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो a प्लस बी बाई 2 करके, y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो a प्लस बी बाई 2 करके, और फिर रिलेट करके लोकस t को एलिमिनेट करके लोकस कर सकते हो, ठीक है. तो इससे आपको काफ़ी ऑर्थो सेंटर मिल गया, सर्कम सेंटर मिल गया, ठीक है. सेंट्रॉइड भी मिल जाएगा लोकस, क्योंकि इफ़ यू नो एच एंड ओ, यू नो लाइक एच जी ओ, सेंट्रॉइड विल डिवाइड इन 2:1 रेशियो. तो अगर एच का लोकेशन आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स पे, इफ़ दिस इज ऑन द लाइन and this is on, you know, like on a curve, so from there you can also find g, or g you can also find directly from 80 a square 80, and this point you know its x coordinate is minus a and y coordinate इसके टर्म में आ जाएगा, ठीक है, t के टर्म में वो आप निकाल सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से. इनफैक्ट y coordinate of any tangent will be, x coordinate will be geometric mean and y coordinate is arithmetic mean. मीन्स अगर ये 81 a square 281 है और ये 82 स्क्वायर 282 है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने वाला है वो जो होगा वो 81 t2 और 281 प्लस 282 बाई 2 आएगा. अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जिससे डेफिनेटली जे मेंस क्वेश्चन पूछ सकता है. अगर आप पॉइंट पी से अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालोगे फोकल कॉर्ड पे, तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फोकस ही होगा, और ये बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी है. तो इफ़ वी हैव सम एनी पैराबोला, ऑफ कोर्स इन योर सिलेबस वी हैव स्टैंडर्ड, सो द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एनी पैराबोला इवन इफ इट इज इंक्लाइन, ठीक है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर. लेकिन अगर ये मैं स्टैंडर्ड भी लूँ तो क्या होगा, आप स्टैंडर्ड में एवरी प्रॉपर्टी यू कैन प्रूव इजीली. तो सपोज दिस इज आवर फोकस एंड दिस इज फोकल कॉर्ड, टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, सो डेफिनेटली दे विल मीट डायरेक्ट्रिक्स. तो अगर ये इसको मैं एक दूसरा फोकल कॉर्ड ले लूँ और फिर वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो देखो ब्यूटीफुली इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, मीन्स लोकस जो है स्ट्रेट लाइन होगा और इस पर स्लाइड करेगा और वो 90 डिग्री बनेगा. अब अगर तुम यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर लोगे इस पर, तो ये फोकस बनेगा. यहाँ से भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर लोगे इस पर, तो ये भी फोकस बनेगा. तो वो फिर इंटरेस्टिंग चीज़ है. इसका मतलब दिस टेंजेंट सेगमेंट ऑलवेज मेक्स सब्सटेंस 90 डिग्री एट फोकस. टेंजेंट्स ऑलवेज सब्सटेंस 90 डिग्री एट फोकस, ठीक है. और फिर इस सर्कल का सर्कम सेंटर है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो गया, ठीक है. तो इस तरीके से वी कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस. द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज नॉर्मल का इक्वेशन आप याद रख लीजिए, mx माइनस 2am माइनस am क्यू, ठीक है. और तुम देखोगे अगर कोई भी पॉइंट पैराबोला पे अगर कोई भी नॉर्मल है हैविंग स्लोप m, अगर कोई भी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रहा है, सो अल्फा बीटा विल सेटिस्फाई दिस. सो क्लियरली वी आर गेटिंग 3 डिग्री equation, cubic equation. It means maximum number of normal that can pass through a point is 3 maximum. अब यूजुअली अगर अल्फा कॉमा बीटा अगर पॉइंट अगर एक्सिस पे दे दे, दे गिवन द एक्सिस, तो फिर तुमको पता है ये एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. तो वाई 0 करोगे और एक्स को अल्फा कर दोगे,
तो -2am माइनस एम क्यू, तो एक तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होगा, दैट इज़ क्लियरली ट्रू, क्योंकि डेफिनेटली विथ अल्फा कॉमा 0 देयर इज अ नॉर्मल विच इज पासिंग थ्रू वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. Now about two roots, it might be possible, it might not be possible. ठीक है, that depends on whether now the cubic equation will have two root or not. क्योंकि अगर m को कैंसिल कर दोगे तो वी हैव am स्क्वायर प्लस 2a इक्वल्स अल्फा. ठीक है, तो am स्क्वायर इक्वल्स अल्फा माइनस 2a. तो अब आप देख सकते हो इफ़ अल्फा इज मोर देन 2a तब तो m का 2 वैल्यू आएगा. ठीक, इट मीन्स इफ़ अल्फा इज मोर देन ट्वाइस ऑफ फोकस डिस्टेंस, अगर 2a के बाद में कोई भी पॉइंट में ले लूँ एक्सिस पे, तो फिर यहाँ से कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं? 3 नॉर्मल, एक ये एक वो और एक तो ऑलवेज एक्स एक्सिस नॉर्मल है, कोई भी पॉइंट ले लो. अगर अल्फा एक्जैक्टली 2a हो जाएगा तो यहाँ से जो है वो m का वैल्यू 0, तो मीन्स सिर्फ एक ही नॉर्मल होगा और ये m इक्वल टू 0 है. अल्फा अगर लेस देन 2a होगा तब ये नेगेटिव हो जाएगा, इट मीन्स वहाँ से सिर्फ एक ही नॉर्मल ड्रॉ होगा, क्योंकि यहाँ से कोई रूट नहीं आएगा. ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के लिए इवन यू कैन यूज़ कैलकुलस. कोई भी एक पॉइंट ले लो, 80a स्क्वायर 280, अगर जो बच्चे ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं पढ़े हो उसके लिए. तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, डिफ्रेंशिएट करो 2y वाई डैश इक्वल्स 4a, तो यहाँ से वाई डैश का वैल्यू आ जाएगा व्हाट वी आर गेटिंग 2a बाई वाई. नाउ 280 फिल पुट, सो विल गेट वाई डैश इज 1/2. इट मीन्स विद दिस पॉइंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज 1/2. अब टेंजेंट का स्लोप 1/2 है तो टेंजेंट का इक्वेशन भी आप लिख सकते हो, y माइनस 280 इक्वल्स स्लोप 1/t इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर. और फिर सपोज टेंजेंट इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट, अगर तो वो उस पॉइंट सपोज 1,2 तो इसको सेटिस्फाई करवा दो, और सपोज -1,2 सपोज, सो विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन t, 2 वैल्यू आएगा. इट मीन्स देयर इज 2 सच टेंजेंट्स लाइन. सो द पॉइंट इज, अगर आप बेसिक पता है, सो लेट्स स्टार्ट विथ इलिप्स क्वेश्चन एंड सी व्हाट वाज देयर इन द बकेट ऑफ इलिप्स. अब इलिप्स में अगेन द सिलेबस इज एक्सटेंडेड इलिप्स and the only thing I think you need to know is tangent equation to the extended equation, normal and eccentricity formula. अगर आपको इतना पता है और बेसिक 2-3 प्रॉपर्टी पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन जेईई मेंस का कर सकते हो. ठीक है, आई एम टेलिंग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, रिमेंबर इट. तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट अगेन पी इज अ पॉइंट ऑन द इलिप्स. अब एवरी क्वेश्चन विल हैव सेम आइडिया, वो आप देख सकते हो. लेट अ लाइन पासिंग थ्रू पी पैरेलल. तो पहले क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं. ओके, सो वी हैव एन इलिप्स. Diagram need not to be up to the scale, rough diagram. So let's say we have P is any point. The line passes through P in parallel to y axis. Mesh the circle x square plus y square. अब देखो ये ellipse जो है वो 9 और 4 है, means 3 and 2. The length of semi minor and semi major axis. That's easy. Put y equal to 0, you'll get x3. Put x 0, you will get y2. कोई बच्चे को बहुत पता नहीं है वो भी कर सकता है इसमें. ठीक है, अगर आपका कैलकुलस सही है तो कोऑर्डिनेट खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि आप टेंजेंट नॉर्मल को ऑलवेज बेवकूफ़ बना सकते हो यूजिंग कैलकुलस. यू कैन फाइंड. द क्वेश्चन इज वेयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 9. सो दिस इज अ सर्कल विल गेट. सो बेसिकली इट्स ऑक्सिलरी सर्कल एनीवे, इवन इफ यू डोंट नो इट डजंट मैटर. सो एट पी meets it at point q such that p q are on the same side of x axis. देखो p is here and this is x axis, so q must be this, because we can have two possibilities for q, एक ऊपर एक नीचे, but they are on same side, so q is this. Fine. Next, the eccentricity of locus of point r on OP such that pr is to rq is 4:3. Okay, now we want a point r such that pr, okay, p and q are on the same side. The eccentricity of locus of point r on pq, so on pq we want a point r such that this distance pr is to rq, means internally is to divide in the ratio 4:3. Now this becomes very easy question. क्यों? क्योंकि point p को we can take in parametric form. तो point p को क्या लिख सकते हैं, 3 cos theta, 2 sin theta. Equation of ellipse in parametric form, NCERT video. तो point q will be what? X coordinate will be same. X coordinate is 3 cos theta. तो y coordinate point q का क्या आ जाएगा, 3 cos theta, 3 sin theta. अब तो क्वेश्चन बहुत ही बोर्ड लेवल का हो गया, because we have 2 point, p is known, q is known, so you can find point r which divides in 4:3. ठीक है, तो r का सपोज कोऑर्डिनेट h कॉमा q, so h will become what, बाइसेक्शन फार्मूला 3 cos theta and k is 18/7 sin theta. लोकस क्या आएगा, लोकस इज यू कैन राइट cos theta is h/3 and sin theta is 7k/18, right? So use cos square theta plus sin square is 1, so that gives locus as x square by 9 plus 49 y square by
324 इज 1। अब यहाँ से ये भी एक इलिप्स हो गया, तो इंसेंट्रिसिटी इज ई इक्वल्स 1 माइनस छोटू का स्क्वायर बाय ग्रेटर स्क्वायर, सो स्मॉलर बाय बिगर, सो स्मॉलर इज व्हाट, smaller by bigger will get 324 by 49 into 9 and which gives you root 13 by 7. So option 4 is coming. Okay, देखो it's already in this x square by something and y square by 324 by 49. So 1 minus 324 by 49, smaller is this quantity, by bigger is 9. Why we write smaller by bigger? ऐसे याद करो क्योंकि eccentricity always positive होगा, तो 1 minus something, this something must be a fraction, that's why small by big. पैराबोला के केस में it should be bigger by a smaller whole square minus 1 because eccentricity of in hyperbola it is more than 1, right? Next is length of chord of ellipse whose midpoint is 1, 2 by 5. तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि we have an ellipse 5 and 4 minor and major axis. Now we have to find a chord having midpoint is given. So let's say midpoint of this chord is 1, 2 by 5. And then we need to find the length of this chord. Okay. Now the first idea that you have to check is if the midpoint would have been focused, then length of chord would be extremely easy. It can be even bits question. How? Let's say focus becomes one of the point, then now the only chord having midpoint as focus will be lattice rectum. Okay, so kabhi kabhi, but here it is not the case because y coordinate is not 0. Lekin sometimes they might ask you this, so be aware. अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा बिकॉज इफ़ यू नो द मिड पॉइंट इज 1,25, वी नो द इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड, सो टी इक्वल टू S1. अब टी इक्वल टू S1 इस पे लगाओगे, टेंजेंट के लिए रिप्लेस एक्स स्क्वायर विथ x1, सो इट विल बिकम x बाई 25, y बाई 1, y इंटू 2 बाई 5 इंटू 16, सो y बाई 40 इक्वल्स S1. इन दिस एक्सप्रेशन पुट 1 इंटू बाई 5, सो दैट्स 1 बाई 100. Okay, so the equation that I am getting is 5y equals 10 minus 8x. 5y plus 10x. 8x is 10. Okay, now definitely this line will intersect this at 2 points, right? At P and Q, and we have to find distance P and Q. Now one way of doing is you find point P and Q separately, ठीक है? और फिर आंसर ले आओ, क्योंकि we have this line and we got this ellipse. Solve line with ellipse. Find the value of, let's say this is x1 comma y1, x2 comma y2. Find the value of x1 and x2 and similarly put x1 x2 in here, you'll get y1 y2. वो फाइंड करके आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल सकते हो, लेकिन वो अगेन बहुत ही लेंदी हो जाएगा. दैट्स नॉट अ स्मार्ट वे. whenever you have to find the length of chord of any conic section, what is a smart way? देखो स्मार्ट वे ये, what is this distance, this length pq, we can write it's y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square. Now we know since y2 minus y1, since y will satisfy this equation, right? So 5y2, because they lie on a line, is 10 minus 8x2. Similarly 5y1 is 10 minus 8x1. So if I subtract this, I'll get 5 times y2 minus y1 equals 8 times x1 minus x2. I hope this is clear. So y2 minus y1 is 8 by 5 times this. अब मजा आ गया, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? इट इज़ 8 by 5 होल स्क्वायर एंड x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस दैट इज x2 minus x1. So overall we have mod of x2 minus x1, that can be out, root over 1 plus 8 by 5 whole square. So just I need to find difference between roots. If I can find mod x2 minus x1, that's done. Now how to find mod x2 minus x1? How to find mod x2 minus x1? That's not difficult. You don't need to find x1 x2 separately. अब देखो, since we know this quantity can be written as a plus b whole square minus 4ab, right? The square root of that. So if I can find the sum of root x1 plus x2 and product of root x1 x2. Okay, sum of root of what? So imagine a quadratic in x. It will give two values. So sum of root and product of root will give the answer. अब sum of root कैसे find करेंगे? वो आसान है. Y we have seen, it's 10 minus 8x by 5. So if I'll put this y value in the ellipse equation, so I'm getting two values of x, right? So x square by 25 plus 10 minus 8x by 5 whole square equals 1. अब देखो, this is a quadratic and you don't need to find anything. Sum of root you know, minus b by x. So you'll get something x square, which you do, it's very easy, plus something x plus some constant equals 0.
So x1 plus x2 is minus this hash by this and x1 x2 is this by this. So you don't need any calculation. अगर पुट करोगे डायरेक्टली जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा √16 think 1691/5. Okay, so first answer will be it. So how we have saved the calculation using very beautiful concept is in general if you have any line y equal to mx plus c, if it cuts a conic section maybe parabola hyperbola ellipse, तो फिर ये जो डिस्टेंस आएगा पी क्यू का, दैट डिस्टेंस आई हैव प्रूव्ड हियर इज नथिंग बट मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट. सो मॉड ऑफ x2 minus x1 mod of x2 minus x1 टाइम्स √1 प्लस व्हाट इज 8/5. देखो ये स्लोप का स्क्वायर बन जाएगा. सो 1 + m². सो दिस इज अ trick for finding length of chord. Not only a trick, I have proved also from basic. Okay, above. So this was also a good question based on basic. Next, if the point of intersection of two conic lies on the curve इतना and इतना times area of rectangle for intersection points. अब देखो फिर ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है. डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे है? These two conics they have given, not tonics. X square plus y square is this, so it's clearly a circle, and second is an ellipse. So we have an ellipse and we have got a circle. They have told like these point of intersection lie on the curve y square equals 3x square. अब देखो y square equals 3x square, that will represent y equal to √3x and y equal to minus √3x. इसका मतलब ये दोनों लाइन पे लाई कर रहा हो. जैसे ही पिक्चर बना है तो फील आ गया है. ठीक है, अब तुम क्या करोगे? अब एक तो तरीका है जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो. ठीक है, और जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज अल्फा का बीटा होगा उसको मैं इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दूंगा. जैसे सेटिस्फाई करूंगा आई विल गेट द वैल्यू ऑफ बी. ठीक है, एंड वंस बी इज नोन रेस्ट पार्ट इज ऑब्वियस. ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? चूंकि वाई स्क्वायर इज 3x स्क्वायर तो यहाँ पे फाइंड करना आसान था. दूसरा तरीका है जो इस दोनों इक्वेशन से को तुम ऐसे सबट्रैक्ट करो या ऐड करो सच दैट इट गिव्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. ओके, सो सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाई 16 = 1 जो है. तो हम अगर फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिखा, अब देखो दिमाग लगाते हैं. अगर सपोज फर्स्ट इक्वेशन को मैं एक्स स्क्वायर बाई 4b प्लस वाई स्क्वायर बाई 4b = 1 ऐसा लिख दिया. सेकेंड इक्वेशन को एक्स स्क्वायर बाई 16. अब ये सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा यूजुअली, क्योंकि थोड़ा क्रिएटिव हो गए तब ये सोच पाओगे. बी स्क्वायर = 1. Usually know so this is ellipse and circle. So if I let's say suppose if I add this equation blindly, तो फिर क्या मिलेगा? We'll get x square some coefficient plus y square some coefficient 1/4b plus 1/b square = 2. फिर अगर मैं 2 को इधर ले आऊँ समथिंग बाई समथिंग, अगर मैं ब्लाइंडली इस दोनों को ऐड करूँ तो वो एक फिर इलिप्स इक्वेशन दे दिया. राइट, दैट इज गिविंग इलिप्स. इट मीन्स एनी फैमिली ऑफ इलिप्स पासिंग थ्रू दीज टू, तो एक कुछ ऐसा इलिप्स होगा. That can also be represented by simply adding these two equations. But what we want is वो लाइन वाला इक्वेशन. अब सोचो y स्क्वायर 3x स्क्वायर कैसे प्रोड्यूस होगा, वो लाइन कैसे प्रोड्यूस होगा यूजिंग दिस टू कर्व. What if we subtract it? Because to produce line constant टर्म नहीं आना चाहिए. So if I subtract, I am getting x square 1/4b minus 1/16 plus y square 1/4b minus 1/b square = 0. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? यहाँ से आया एक्स स्क्वायर टाइम्स 1/4b माइनस 1/16 इज वाई स्क्वायर 1/b स्क्वायर माइनस 1/4. अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेफिनेटली ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा अगर ये दोनों कोएफिशिएंट नॉन जीरो है तो. क्यों ऐसा क्यों रिप्रेजेंट कर रहा होगा? तो सोचो ये इलिप्स है एंड दिस इज आवर सर्कल. राइट, now if I look at this point P, it is lying on circle also and ellipse also. So the point P satisfy first equation and second equation. So if I subtract, still it satisfy this minus this. It means if when I subtract, so this equation definitely is passing through point P. Similarly, this expression is passing through Q. It's passing through R and S. But I know by the nature of this expression because anyway it's constant. It's like 5x square = 4y square. In fact here it's like y square is 3x square. ठीक है, तो ये डेफिनेटली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है. अब कैसा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये एक ऐसा, एक y = √3x होगा, एक y = -√3x. अब कोई बच्चा सपोज ही इज टेलिंग लाइक दिस, सर व्हाई नॉट इट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग PR and QS, व्हाई इट इज डायगोनल ओनली.
ठीक है। अब ये भी तुम डिफाइन कर सकते हो, ये तुम सोचो यो क्यू आर और पी आर को क्यों ना रिप्रेजेंट किया, वाई इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायगोनल, क्योंकि देखो जो भी ये लाइन है दिस इज डेफिनेटली सेटिस्फाइड बाय 0,0, तो ये तो सेंटर ऑफ इलिप्स से पास कर ही रहा होगा और सेंटर ऑफ सर्कल से पास कर रहा होगा, तो डेफिनेटली ये दोनों लाइन तो हो नहीं सकता है, तो इट मस्ट बी डायगोनल बिकॉज इट मस्ट पास थ्रू 0,0। आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक था, ऑल्दो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व डायरेक्टली विच आई एम टेलिंग यू, बट इट्स बेटर टू लर्न सम अमेजिंग टेक्निक। अब यहाँ से क्या करोगे, अब देखो ये इक्वेशन और 3x² इक्वल टू y² सेम हो जाना चाहिए, तो अगर ये दोनों इक्वेशन सेम हो गया तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 1/4b माइनस 1/10 डिवाइडेड बाई 3 मस्ट बी इक्वल टू 1/b² 1/4b डिवाइडेड बाई 1। अब ये सिंपली b का वैल्यू निकाल लो और वो आपका आंसर हो गया। सो आई होप दिस मेथड इज क्लियर। तो अगर आप ये करोगे तो b का 2 वैल्यू जाएगा, b का वैल्यू, क्योंकि देखो ये क्वालिटी कर रहा है, ये 12 आएगा और 4 आएगा। अब ब्यूटी है क्योंकि अगर b का वैल्यू अगर मेरा 4 आ गया, b का वैल्यू 4 आ गया तो दोनों कर्व सेम हो जाएगा। देखो b का 4 मीन्स x² प्लस y² 16, b 4 हो गया तो ये इलिप्स नहीं, ये भी सर्कल हो गया, तो ये दोनों कर्व सेम हो गया, तब तो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन का मतलब ही नहीं है कुछ। इक्वल्स 12 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आने वाला है, ±√12 +(-6), तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर 432, ठीक है। आप इतना तामझाम के अलावा यू कुड हैव डायरेक्टली सॉल्व, यू डायरेक्टली राइट y² इक्वल टू 3x² इन द फर्स्ट एक्सप्रेशन and you get 4x² equals 4b, so x² is b. In the second expression again you put y² is 3x² and you will get again x² equal to something, दोनों को इक्वेट करो डायरेक्टली b का वैल्यू 12 आ जाएगा, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको पता है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बट आई हैव गिवन फैमिली ऑफ कर्व परस्पेक्टिव बिकॉज यूजुअली इन होमोजेनाइजेशन व्हाट डू यू डू इज वन कर्व एंड वन लाइन यू सॉल्व, तो यहाँ पे तुम दोनों कर्व को सब्ट्रैक्ट करके भी वो लाइन को ला सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इमेजिन करो अगर सपोज इंस्टेड ऑफ दिस, जस्ट एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ, इफ क्वेश्चन वुड हैव बीन x² 2 + y² इक्वल्स 1 एंड x² + y² 2 इक्वल्स 1, अगर ये क्वेश्चन होता है, अब ये दो इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप पॉइंट निकाल के फिर ये 2 पॉइंट निकाल के 3 पॉइंट निकाल के, इट्स फाइन टू डू इट लाइक दैट क्योंकि ये सिमेट्रिक सिचुएशन है, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ब्यूटी क्या है, ब्यूटी है जस्ट इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो एंड दैट विल बी द आंसर। वाई इट विल बी x² 3y2, सो 3y2 x² प्लस 3y2 y² इक्वल टू 2, सो आंसर इज 3y4 x² प्लस 3y4 y² इक्वल्स 1। अब डेफिनेटली ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इक्वल्स 4/3 हो जाएगा, इक्वल्स 4/3 इज आंसर। नाउ वाई इट्स रिप्रेजेंटिंग द सर्कल पासिंग थ्रू PQRS, that's quite clear, that's quite clear, क्यों, because this point P satisfy first equation and second, so even if I add the point P must satisfy both, it means point P is satisfying this circle, ये वाला circle, point Q is also satisfying the circle, R and S is also satisfying, so you know definitely this is a circle containing 4 points, so if I add the expression directly I am getting equation of circle. Similarly if we'll subtract, now again if we'll subtract we'll get something x² is something y², so family of lines passing through origin, okay, so directly you'll get this diagonal of this square. Anyway that's fine. Next question, length of minor axis is equal to half the distance in focus, तो ये बहुत ही simple question है, so I'll go fast here. Here directly by drawing diagram you can see minor axis length is 2b, so 2b is equal to half times 2a, 2b is a, तो यहाँ से b/a का वैल्यू जो आ गया, b/a का वैल्यू इज e/2 एंड यू नो व्हाट इज b/e इज √1 माइनस e², सो दैट इज इक्वल टू e/2। तो यहाँ से आप आसानी से e का वैल्यू निकाल सकते हो एंड e का वैल्यू जाएगा वो आ जाएगा 2/√5। क्लियर। Next question, A and B be points on the line, okay, so we have a line and we have got 2 points, A and B. Next is let P divides the line segment AB internally in the ratio 7:3, so P is a point with divides into 7:3, okay. Let 3x equals 25 be directrix of the ellipse, अच्छा, and the corresponding focus be S. If from S perpendicular on x axis passes through P, length of right sector. अब देखो just have to read the question
एंड फॉलो द स्टेप्स दैट्स डन। क्योंकि कुछ भी नहीं है, वो बेसिक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया गया है। Okay, let it now be directrix of ellipse. So from here, what we'll get? So directrix of ellipse is already known, x equal to 25/3, and corresponding force are x. So if you know the point and directrix, अब अल्फा कमा जीरो एंड जीरो कमा बीटा इज पॉइंट। अब देखो ये बकवास इन्फॉर्मेशन देने का काम ही नहीं था। इट मीन्स इफ आई पुट y इक्वल टू जीरो, डायरेक्टली गेट अल्फा का वैल्यू इज 10। सो पॉइंट ए इज नोन एक्चुअली 10 कमा जीरो, एंड व्हाट इज पॉइंट बी? 0 comma beta, so that must satisfy the equation, so directly we'll get beta 0 comma 50/7। तो पॉइंट ए पता है, बी पता है, तो पॉइंट पी पता हो गया, इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 7:3, so that's 3,5। okay, now once we know this point, if we'll see the ellipse, directrix is known, x equal to 25/3, and corresponding to this focus, so you have center 0 comma 0, because this focus is that's where our directrix, negative direction. So with this directrix focus system, now what we know AE value is going to be 3। ठीक है, वो है ना बाबू, AE value is going to be 3, क्योंकि पॉइंट P आपको दे चुका है ना, एंड द corresponding focus S be the perpendicular of directrix passing through point। So if A is 3, we know A by E is again 25/3, your distance है, distance of center from directrix is A by E, distance of center from focus is A, basic definition. So that both information I used. A by E is 25/3 given, and A is 3. Using this equation I can calculate the value of A is 5, और जो B बन के आ रहा है वो आ जाएगा 4। So what is length of lattice rectum? 2b²/a. lattice rectum is this distance from focus. You draw a line perpendicular to x-axis. So it's b²/a and b²/2 2b². Put b in a and we are getting answer 32/5. So this I'll rate as very easy question. आपको just question पढ़ना है. Sorry, answer is 4. Next is, and that's the last question. Yeah. P be a parabola with vertex 2,3 and diatrix. तो suppose कोई भी parabola है. Its vertex is 2,3 and diatrix is 2x plus y equal to 6. Now some of you tell sir it's not a standard parabola, but they must have used a definition. ठीक है. Let the ellipse a comma b of eccentricity passes through the focus of the parabola. Now how to find the focus of this parabola? First thing is you have to calculate focus. तो वो definition से आप कर सकते हो कि you know focus will lie on exactly from 2,0 if I'll drop perpendicular to diatrix. Let's say that point is D. So focus will be exactly at the same distance. No, as OD and OS must be same. OD and OS will be. Now we know point O, and we know basically distance of point O from diatrix. What is that? It's mod of 2 over 3 उसमें डालो, so 4 plus 3 minus 6 by root over 5. So it's basically 1 by root 5. So this distance is known to us 1 by root 5. So focus will definitely be at a distance of 1 by root 5 in the increasing x coordinate. ऐसा आप feel कर सकते हैं. So from parametric form you can find directly focus coordinate. ठीक है? From parametric form you can find focus coordinate. और what you can do focus find करने के लिए, slope of axis is known. Slope of axis is already known, Babu, because this point is on diatrix is known. Okay, so slope of diatrix is known, -2. So slope of axis b will be y equals, sorry, slope b will be half. So you can write the equation of axis. ठीक है. अब जैसे ही आप इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिख दिए और ये स्लोप ऑफ एक्सिस पता है, तो बाय फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू कैन फाइंड पॉइंट डी. Now once you know point D, so S and D का midpoint O will be there. So 2,3 is known as O, D we have calculated and S we can find using midpoint formula of S and D. तो वहाँ से भी निकाल सकते हो, या फिर तुम पैरामेट्रिक फॉर्म से यहाँ से चलो 2 plus this distance 1 by root 5 cos theta, and slope of this line is already known to you. Okay, that is half. So theta you know root over 1 plus 1 by 4 root 5 by 2 आएगा. यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा डालो और वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. द मोमेंट यू विल कैलकुलेट दैट एस का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ से वो आ रहा है अपना आई थिंक 2.4 एंड या 3.2 ये वैल्यूज आएगा.
ठीक है. Now ellipse passes through this, so s का value will get 24/10 and 32/10. Now since ellipse passes through this, so this will satisfy the ellipse equation. So x square by a square plus 32/10 whole square equals 1, and which will give you the value of, and we already know eccentricity, so 1 minus b square by a square is half. तो यहाँ से a square will be 2b square. ठीक है, from the eccentricity equation. Now you put a and b, तो यहाँ से the value that you will get for 2b square by a, what they want, a square of length of lattice rectums. In last question also they have used lattice rectum, so 2b square by a whole square. ये वैल्यू आपको निकल के आएगा 656/25. तो ये भी ठीक ही क्वेश्चन था. अब देखो यूजुअली स्टूडेंट्स टेल्स लाइक क्वेश्चंस आर वेरी लेंथी और फार्मूला वाइज, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट जान रहे हो तो फिर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है. अब इलिप्स में भी स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए टेंजेंट और नॉर्मल का. इनफैक्ट टेंजेंट नॉर्मल आपके सिलेबस में था नहीं, ठीक है, लेकिन देखो फिर भी मिड पॉइंट वाले में t=s1 का यूज़ करके हम कर लिए. अब अगर कोई बच्चा बोलेगा जो सर t=s1 का आप यूज़ कैसे किए, तो सिलेबस से बाहर कर दिया है मेंस में, ठीक है, तो फिर तुम्हारा अप्रोच लेंदी हो जाएगा. फिर तुम क्या करो, इस पॉइंट को ऑलरेडी 1,2/5 इज देयर, यू टेक अ पैरामेट्रिक पॉइंट, सो लाइक 1 + r cos थीटा एंड 1 + r sin थीटा. ठीक है, तो यू कैन राइट पॉइंट पी एज 1 + r cos थीटा एंड 2/5 + r sin थीटा. उस पॉइंट को इस एलिप्स में डालो. ठीक है, नाउ सिंस इज अ मिड पॉइंट, तो इसीलिए जो r का वैल्यू आएगा दैट विल बी अलजेब्राइक डिस्टेंस, यू गेट r1 एंड r2. सो r1 + r2 मस्ट बी 0. क्यों? क्योंकि r1 विल बी -r2 अलजेब्राइकली. जैसे ही 0 करोगे थीटा का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, जैसे ही थीटा का वैल्यू आ जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, वहाँ से थीटा का वैल्यू रखो एंड बेसिकली वी नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस. तो अब ये डिस्टेंस जो आएगा पी क्यू दैट विल बी r1 - r2 का मॉड. ओके, सो दैट इज अ बाईपास मेथड इफ यू क्लेम लाइक सिंस मेन सिलेबस में नहीं है. तो अब टेंजेंट नॉर्मल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन करना ही नहीं है, क्योंकि तुम देख सकते हो ना वो सिलेबस में. 0 to π/2 इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज √7 टाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स. सो देखो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. इसेंट्रिसिटी फार्मूला बस लगाओ एंड यू विल गेट E of H and E of C and put the relation and we get theta. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस हाइपरबोला को वी कैन राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑलवेज राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो x स्क्वायर 5 y स्क्वायर cos secant स्क्वायर थीटा, सो sin स्क्वायर थीटा बाई 5 इक्वल्स 1. सो दिस इज हाइपरबोला. इलिप्स इज x स्क्वायर बाई sin स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर बाई 5 इक्वल्स 1. 5 इधर आएगा. तो दिस इज इलिप्स, राइट. सो व्हाट इज E of H? हाइपरबोला 1 + sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा. क्योंकि हाइपरबोला विल बी 1 माइनस व्हाट विल बी दिस इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज समथिंग स्क्वायर -1. ठीक है, सो ऑफ कोर्स लार्जर स्क्वायर बाय स्मॉलर स्क्वायर -1. तो ये हो जाएगा +1 करते हैं ना, 1 + b स्क्वायर बाई a स्क्वायर. सो b स्क्वायर इज व्हाट 5 sin स्क्वायर थीटा. फॉर हाइपरबोला इट्स 1 + b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, छोटू स्क्वायर बाई ग्रेटर स्क्वायर. सो 5 कैंसिल, 1 + cos. इलिप्स के लिए भी इसेंट्रिसिटी आसानी से निकाल सकते हो, 1 - sin स्क्वायर थीटा. बस इसको √7 टाइम करो तो sin थीटा इज √3/2. द आंसर π/3. सो इट वाज इजियर वन. सेकंड इज दिस, इतना भी एन इलिप्स, इट इज इसेंट्रिसिटी 1/√2. अगेन इसेंट्रिसिटी का इनसे पता है इलिप्स का. सो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर √1 दिस इक्वल्स हाफ. सो यहाँ से विल गेट 2b स्क्वायर बाई a इज 14. एंड इस लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो ये भी दे दिया गया है, दैट्स ऑल्सो इक्वल टू 1 - b स्क्वायर बाई a स्क्वायर. ओके, बिकॉज दिस इक्वल टू 1/√2. सो यहाँ से विल गेट 1 - b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज हाफ. ठीक है, एंड 2b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज 14. दोनों को सॉल्व करो. सो E of H जो है नाउ 1 + b स्क्वायर बाई a स्क्वायर. Okay, for this hyperbola eccentricity, and that is giving you √3/2. So E of H whole square is 3/2. अरे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था. देखो हर एक क्वेश्चन इसेंट्रिसिटी पे पूछा गया, मीन्स यू हैव ओनली 2 फार्मूला. फॉर इलिप्स इसेंट्रिसिटी इज 1 - small by big whole square इलिप्स के लिए, एंड फॉर हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी इज 1 + small by big whole square, बिकॉज इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज मोर देन 1. सो 1 + समथिंग शुड बी देयर. इलिप्स में इट शुड बी 1 - समथिंग शुड बी. अगेन वाई स्मॉल बाई बिग, बिकॉज बिग बाई स्मॉल विल मेक दिस इमेजिनरी. तो दैट्स वेरी इजी टू रिमेंबर. ठीक है, इस फॉर्म में याद करो. थर्ड क्वेश्चन भी इसेंट्रिसिटी पे है. कुछ क्वेश्चंस नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है. थर्ड क्वेश्चन में भी इसका इसेंट्रिसिटी वी नो E1 इज 5/4, क्योंकि 1 + छोटू बाई बड़ा.
सो ये 5/4 आ गया. And what is E2? E1, E2 is 1. Why? Because E2 is insect of ellipse, it passes through foci of hyperbola. If E1, E2 is 1, they have already given. तो यहाँ से E2 is 4/5. The ellipse, what is focus of this hyperbola? That is plus minus 5,0. Okay, plus minus 3,0. तो यहाँ से आपका A का वैल्यू 5 आ गया, B का वैल्यू 3 आ गया. ये तो पता है ना, उसके फोकस से फाइन पास करेगा, दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो एलिप्स इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 = 1. ठीक है. तो आपसे क्या पूछ रहा है? देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. सो यू नो लाइक दिस इज हाइपरबोला, समवेयर दिस इज एलिप्स. सो व्हाट विल द लेंथ ऑफ द कॉर्ड? PQ. एलिप्स पैरेलल टू एक्सिस. ऐसा ये PQ का लेंथ आपसे पूछ रहा है. इन पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स आप आसानी से निकाल सकते हो. ठीक है. सो इन पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज प्लस माइनस 5√5/3, 2. So length is 10√5/3. So that was again an easy question, directly based on eccentricity. Next is again length of lattice rectum of hyperbola, and the formula is same to be a square y. Okay, because ellipse and hyperbola differs only in sign. If you'll see the equation, x square by a square minus 1 square b square. तो यहाँ से भी जो अगर hyperbola को suppose in substance pi/3 at the center of hyperbola. So what does question mean? अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में सजाऊं, सो इट विल लुक लाइक दिस. ये हाइपरबोला इज सब्सटेंस 60 डिग्री से बाई 70 डिग्री से 30. तो यहाँ से आई कंटेन 10-30 डिग्रीज बी स्क्वायर बाई. ठीक है. अगर इसको फाइंड करो तो दिस डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाई दिस बाई ए. ठीक है. Because this is lattice rectum, no? So it's passing through focus. This point is A, 0. This distance, which is semi lattice rectum B square by A, this is A. That ratio is 10-30. तो यहाँ से E का वैल्यू which we are getting is √3/9 B square. ठीक है. देखो यहाँ से सॉल्व करके 10-30 is 1/√3. Also we know now eccentricity relations E square E1 plus B square by 9. बस क्वेश्चन खत्म. अब उसको उसमें पुट करोगे तो B4 = 3B square plus 27 आ रहा है. And this is giving B square value as 3/2 into 1 plus √13. Now you compare, L is 3, M is 2 and N is 13. So their sum of square is 182. So very easy question. Again eccentricity से पूछा है. This coming to 5, P is a point on hyperbola in the first quadrant. So you know when y is 0, x is 3. So this point is 3,0. So always y is to make a diagram minus 3,0. Such that the area of triangle formed by P and 2 foci is given. So let's say this foci is S dash and S. P is a point. Such that area of triangle is already known is 2√13. अब देखो ये भी बहुत ही आसान है क्योंकि S dash का distance you know. So what is area of triangle? Half into base into height. So let's say point x coordinate is x, y. So half into S dash into height is y coordinate, right? Wherever it is, may not be exactly focus. Let's say P point is here, so that this area. So this area is 2√13. So from here, S dash distance already known to us. It is 2AE, right? So once you know S dash distance 2AE, so that value will be 2√13. So that gives you y coordinate. So y coordinate value is 2 आ जाएगा. Moment you know y coordinate, put y coordinate here, you will get x coordinate of the point. The x coordinate that will get is 3√2. What they want? So x coordinate is 3√2 for this point and y coordinate is 2. Now distance of 3√2, 2 from origin is √22. It's a square they are asking, so 22 is that. Coming to the next question, foci of parabola is same as ellipse, means they are cofocal. Eccentricity of hyperbola is it. तो फिर से वही इस ellipse के लिए भी नो पैरामीटर इज A3 and B5. So eccentricity is 1 minus 9/25, which is 4/5. अब focus of this hyperbola, eccentricity hyperbola is same. The focus will be 0 plus minus b. Okay, vertical. This is vertical ellipse, right? X is 3 and y is continuing at 5. So the ellipse will be this vertical ellipse, because if you put y0, x is 3, but x0 will give 5. So we have more length along y-axis. So circle is slapped more towards x-axis. तो अब यहाँ पे कितना जाएगा 0, a and 0, minus a. Or I am telling 0, b, 0, minus a.
So that will give you 0 comma B will come because of this line, not A, because now you have more portion towards this. So you can imagine as if this horizontal ellipse is rotated by 90 degree. So what was AE comma 0 will become 0 comma B. Remember this. AE मत कर देना क्योंकि AE यहाँ का पॉइंट आएगा, ठीक है, B यहाँ. अब इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज 4/5 इंटू 15/8 times, so it's 3/2. Now we can assume equation of hyperbola is, let's say, x square by a square minus y square by b square equals 1. अब you already know b times eccentricity EB का वैल्यू दिया गया है 4, so b is 8/3. a स्क्वायर भी यहाँ से आ जाएगा, a स्क्वायर इज b स्क्वायर इंटू e of h स्क्वायर माइनस 1 और e of h स्क्वायर इज 1 प्लस रूट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तब यहाँ से अब डायरेक्टली आपका a और b का वैल्यू आ जाएगा. a इज 80/9, a स्क्वायर इज 80/9 इनफैक्ट, एंड b स्क्वायर इज 64/9. तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला. ओके, सो दैट विल बिकम प्लस माइनस 16/9. अब ये कैलकुलेशन चेक कर लेना. एंड व्हाट इज PS, व्हाट दे वांट, डिस्टेंस on the hyperbola is equal to the smaller focal distance. So focal distance in case of hyperbola is again the best thing is dialectics property you can use. Okay, so PS will be E times of PM. तो यहाँ से I can tell PS is E which is 3/2 and PM value will be 14/3 into 2√2/5 minus 16/9. तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आंसर you will get 7√2/5 minus 1/8. So first it was fine. I'll not tell it's difficult question क्योंकि it's nothing more than eccentricity calculation and definition of PSCGPM. हाँ, यहाँ पे कोई बच्चा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन आपको बस क्वेश्चंस को पेशेंस के साथ करना है. और ये पेशेंस कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस से. वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस विल कम बिकॉज इन योर सिलेबस यू हैव ओनली स्टैंडर्ड पैराबोला देयर इज माइनर एडवांस. तो आपको कुछ करना ही होगा, इसेंट्रिसिटी और बेसिक चीज़ करना होगा. लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन. फिर सेम घिसा पिसा क्वेश्चन. ओके, कुछ नया दिख ही नहीं रहा है क्वेश्चन में. इलिप्स इज गिवन, हर एक सेशन में सेम क्वेश्चन है. फोकाई एंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज गिवन, सो वट एवर इज गिवन जस्ट यू डू. ओके, प्लस माइनस ए कॉमा 0, ए इज गिवन प्लस माइनस 5, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम टू बी स्क्वायर बाई इक्वल टू √2. देखो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आइदर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का है और इसेंट्रिसिटी का है, और कुछ है ही नहीं. फिर एक रिलेशन क्या है इलिप्स के लिए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर. अब तीनों रिलेशंस को बस 3 इक्वेशन 3 अननोन है वो सॉल्व करते रहो. यहाँ से वैल्यू आएगा इसेंट्रिसिटी में, एक बार चेक कर लेना. ई प्लस √2 एलिमिनेट कर दोगे, √2 माइनस 1. नाउ सम ऑफ यू विल टेल सर द मेजर पॉइंट वाज एलिमिनेशन आल्सो, क्योंकि ऑल ऑफ अस नो हाउ टू सॉल्व. नहीं, ऐसा बात नहीं है, पहले तो आप आइडिया कर लो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा. नाउ वी नो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन बी एंड ए. तो बी को यू राइट इन टर्म्स ऑफ ए, तो अब बी स्क्वायर को ए के टर्म में लिख दो, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसेंट्रिसिटी में एक रिलेशन आ गया. ई कैन नॉट बी माइनस √2 क्योंकि एलिप्स है, सो 1 से ज़्यादा नहीं हुआ, सो ई इज 1/√2. जैसे ही ई इक्वल टू 1/√2 आ गया तो इक्वेशन ऑफ जो हाइपरबोला हो जाएगा ये वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज 1. ए का वैल्यू यहाँ से आ गया 5√2 एंड बी विल बी 5. तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला जो होगा वो √51, सो इट्स होल स्क्वायर इज 51. सो दिस वाज आल्सो एन इजी क्वेश्चन. So I hope the entire conic section you have understood and these were the questions from JEE Mains 2024 Jan session. और सिमिलर ही क्वेश्चन आपका आएगा अप्रैल में. हाँ, T इक्वल टू S. तो आपको करना क्या, पैराबोला के केस में यू नीड टू गो थ्रू स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट्स. हाइपरबोला में भी एक बार बस स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला एलिप्स में टेंजेंट का देख लेना. नॉर्मल का कोई काम नहीं है, नॉर्मल का यू कैन जस्ट डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल यूजिंग कैलकुलस. और बेसिक प्रॉपर्टीज जो है कुछ पैराबोला के केस में, एरिया फाउंड बाय रैंडम ट्रायंगल एंड टेंजेंट्स रेशियो जो होता है वो वहाँ पे 2:1 होता है, या फिर डायरेक्ट्रिक्स का प्रॉपर्टी इन केस ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला. बस ये देख जाना, दैट्स एनफ फॉर गेटिंग फुल मार्क्स इन कॉनिक सेक्शन. स्ट्रेट लाइन का सेशन आप खुद से रिवाइज कर सकते हो. एंड दिस वाज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर मेंस. आई एनलाइटन यू विद मोर चैलेंजिंग and interesting ideas for JEE.